my channel. If you are watching this face for the very first time, so let me tell you, I am Khushi Bihani and I make videos on fashion, personal care and beauty. So please do subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon to stay updated to my channel. तो आपको इस वीडियो के टाइटल से ऑब्वियसली पता चल ही गया होगा कि व्हाट दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट. सो आई विल नॉट वेस्ट योर फर्दर टाइम एंड लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो. बिफोर गेटिंग इन द एक्चुअल वीडियो, लेट मी टेल यू द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग for your makeup that even if you have a high rated makeup products, लेकिन अगर आपका बेस जो है वो अगर फुल्ली मॉइस्चराइज्ड नहीं हो, फुल्ली नरिश ना हो, तो आपका जो मेकअप होगा वो पूरा ऐसे मेकअप लुक देगा. मतलब सामने से ऐसा पता चलेगा कि डेट यू हैव डन अ मेकअप. लेकिन मोस्टली वी प्रेफर नो मेकअप लुक. तो उसके लिए अपना जो बेस होता है वो बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज और बहुत अच्छे से होना चाहिए. एंड I guess so nowadays everyone do know about how to make a perfect base, but if you are the one जिसको अभी तक पता नहीं है, and that's totally okay, like you are a totally beginner for the makeup, it's okay. I made full detailed video on makeup जहाँ पे आपको starting से लेके end तक अच्छे से आपको पता चलेगा कि कैसे करना है मेकअप. उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा, तो इस वीडियो के बाद उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा. एंड यू नो I was scrolling and I felt something unique, how to get glowy base with just two product, and I was literally fascinated by that, but I'm not sure if that will work or not. So in this video I will test that viral makeup hack. Yeah, we can say that hack. So I will review on that and let's see that it will really work or not. So now just let's get into the video. I have cleaned my face. Yeah, that's the most important thing to do. Firstly, clean your face before doing any type of makeup. I will just moisturize my face and I am using this Pond's super light gel oil free moisturizer. I am just loving this moisturizer. Actually I have like a combination skin, so I felt कि मतलब मुझे बहुत सारे moisturizer होते हैं वो मतलब सूट नहीं करते हैं. They just left so much oil on my face. That's why I literally needed a oil free moisturizer, and this Pond's moisturizer is just, I'm just loving it so much. Do moisturize your face properly and don't forget the neck. I literally say this on my every video, every makeup video. उसके बाद if you want to use the serums or vitamin C serum, go for it. I'm directly using the SPF, and yeah, do use SPF 50 only I guess so, क्योंकि 25-30 के जो रेंज में होते हैं that does not block every UV rays. So yeah, I'm using this Wadi Herbals SPF. यूजिंग ऑफ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ SPF इज़ सो नेसेसरी. मतलब कि ना थोड़ा कम ना बहुत ज़्यादा, मतलब SPF कुछ रेंज तक अपने को रोज़ यूज़ करना चाहिए. एंड मेक श्योर वट एवर यू यूज़ वो अच्छे से पूरे फेस पर ब्लेंड हो जाना चाहिए. उस पर कुछ वाइटिश मार्क्स या कोई भी टोन नहीं रहना चाहिए, पूरा इक्वल टोन रहे. तो फॉर डैट यूज़ योर फिंगर्स. Always wait for few minutes after you apply anything on face to just कि वो अच्छे से settle हो जाए अपनी skin के ऊपर. So now always use primer. I have my kit ready, so let's just primerize our face. I'm using this MAC Fit Me primer. या टू बी वेरी ऑनेस्ट समटाइम आई डू फील लाइक जो क्रीम बेस्ड प्राइमर होते हैं वो ज़्यादा बेटर होते हैं. लाइक सबसे अच्छा आई फेल्ट कि नायका का जो प्राइमर है दैट्स रियली कूल. बट या ऑन अ अल्टरनेटिव बेसिस वी कैन यूज़ जेल बेस्ड प्राइमर ऑल्सो. So yeah, I am done with the primer. This is like literal easy base for our makeup. No makeup look. Two main product we need. The very first is the foundation. We need foundation, and I am using this Maybelline Fit Me foundation.
I'm in the shade 310 Sun Beach. And the second product we need is highlighter. I'm using this Swiss Beauty highlighter. It has like these 4 shades. I hope you can see. तो अपने को क्या करना है कि अपने ये फाउंडेशन के साथ इस हाइलाइटर को मिक्स करने वाले हैं. सो लेट्स जस्ट oh, it's so liquidy right now. OMG. This is our foundation. Okay, now we will add I think so this rose gold highlighter. Yeah, make sure you use the light shade highlighter because the dark or like bronze color, it will give you darker tone on your face after you apply that mixture. Now just mix it properly. It just change it color to like a small amount of rose gold type. I'm loving it. Yeah, make sure you take your proper time to mix this mixture very properly because it's so important. So our like foundation and highlighter mixture is ready, and I hope you can see that it literally changed color to the highlighter color. Oh, this looks so pretty. Now just we apply this on our face. If you have any type of dark spot or pigmentation or pimple mark on your face, make sure you cover them firstly. And if you also have like dark circles under your eye, yeah, do cover your under eye also. The main reason on your face which you should focus is your under eye, your nose region, and your lip region, and your forehead also. Now just use a fluffy brush and make sure you blend it properly all your face, and yeah, don't forget the neck also. After blending, if you feel like some of the region is still not properly fixed, you can use it again. मैंने इस साइड के फेस पे पूरा लाइक जो अपनों ने फाउंडेशन बनाया था, फाउंडेशन हाइलाइटर का जो पेस्ट बनाया था, दैट आई हैव अप्लाइड ऑन दिस फेस एंड इट टोटली नॉर्मल. सो आई होप यू आर able to differentiate the two sides. It's like अपनों ने like ये वाला पीछी जो हाइलाइटर था वो मिक्स किया, तो it's literally giving that tone on our face which I feel like we can use as a color corrector also. I literally feel this. Oh, I am just loving it. It's just like pinky vibe. Now just apply it on our second half also. The best part about this, I felt कि ये आपके dark circles पे भी effective है. Like it's literally cover my dark circles also. Make sure जो आपका फाउंडेशन एंड हाइलाइटर पेस्ट है, इट्स टोटली ब्लेंडेड ऑल ओवर योर फेस. I'm just loving its vibe. Nice. Now we don't need anything. Now just do your another essential stuff. Like let's do eyebrows first. These are like most important for me.
Now move on. I don't think so we need concealer after this, so I will not go with the concealer. We have done our eyebrows. Now just do some, let's just curl our eyelashes. These are okay. Now using this Mion mascara. Using this Swiss Beauty eyeliner. Okay, so yeah, I am done with the eyeliner. Now we need to set it properly, तो उसके लिए you can use makeup fixer also and ये losing powder या compact powder भी use कर सकते हैं. I am using the compact powder and I hope you don't use that shimmer कॉम्पैक्ट पाउडर, क्योंकि अपन ने हाइलाइटर यूज़ कर लिया, तो अगर अपनी शिमर वाला कॉम्पैक्ट पाउडर भी यूज़ करेंगे तो इट विल लुक सो मच ऑन टू आवर फेस. सो यूज़ द सिंपल वन. Just dab it properly. इसमें जो भी एक्स्ट्रा अपने को फील होगा वी विल just remove it after it settled properly. Now just let it settle. I think so this is it. Now just the only thing left is lipstick. I'm using this Swiss Beauty Color Star lipstick, which is in shade Ionic Nude S23. Now just remove the extra powder from our face. So yeah, I hope this is it. Now just add this highlighter of beauty ones also. So this is it. This is our glowy base makeup look, and the best part about this makeup look that we don't need too much product.
we just use foundation and highlighter, and which you easily found on online websites or in the shops also. तो मेरे हिसाब से इट्स क्वाइट अफोर्डेबल मेकअप लुक एंड ब्यूटीफुल मेकअप लुक आई गेस सो। आई डोंट थिंक सो कि इसमें ऐसा कुछ भी लग रहा है कि वी जस्ट यूज फाउंडेशन, like don't even a concealer or a BBCC cream, nothing. And so I'm just loving this look so much, and I think so I will use this as my go routine, or just कि जब भी मेरे को लाइक नो मेकअप लुक चाहिए एंड आई डोंट हैव एनी टाइम, और मतलब आई एम इन अ रश, तो उसके लिए ये काफ़ी इजीली और काफ़ी टाइम पर होने वाला लुक है। सो आई थिंक सो यू शुड ऑल्सो ट्राई इट वंस एंड डू लेट मी नो कि ये आपको कैसा लगा एंड हाउ दिस इज़ वर्किंग ऑन योर स्किन टाइप। आई थिंक सो इट विल वर्क ऑन योर स्किन टाइप। जस्ट यूज योर फाउंडेशन that matching your skin tone, and I think so it's quite good. So if you do like this video a little bit, please do subscribe to my channel and give this video a big thumbs up, and don't forget to share this video who loves doing makeup. I am literally the one who literally love doing makeup or like simple makeup. So yeah, do share with your loved ones, and till next video, bye bye.